So the main job of an operating system is to start the computer. The process of starting or restarting is called booting. Due to some technical problem, the first video was completed. Now I am starting the next video. Each time you boot a computer, the necessary operating system files are loaded or copied for your hard disk that may appear on the screen. We can say booting means starting of a computer. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और लोड होता है तो हार्ड डिस्क की सारी कॉपीज़ क्या होती हैं, कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं. एंड फाइनली जब कोई पर्सन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है तो वी सी विंडोज डेस्कटॉप एंड द आइकॉन्स आर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. द बूट प्रोसेस इज सिमिलर टू फॉर लार्ज एंड स्मॉल कंप्यूटर्स. Next heading is process management. The process management module of an operating system takes care of the creation and deletion of the processes. मीन्स जो प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को बनाने और उनके डिलीट करने में उनकी हेल्प करता है. Scheduling of various system resources or different processing, requesting them, mechanism, synchronization and communication. कई फाइलों को रिक्वेस्ट करना, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं. और थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड memory management. The memory management module of an operating system takes care of allocation and reallocation of a memory space to the various program in need in the source. मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करना बताते हैं. फाइल मैनेजमेंट. कंप्यूटर यूजेज लॉट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस मीन्स हार्ड डिस्क. तो फाइल मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में स्टोर करना. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. That is very important. The security module of an operating system protect the resources and information of a computer system against destruction and unauthorized access. Means we can say the security module of operating system जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को, जिससे हमारा डेटा लॉस ना हो. नेक्स्ट 6 पॉइंट इज कमांड इंटरप्रिटेशन. कंप्यूटर में आपने देखा होगा जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो फर्स्ट यूज़र जो कमांड देते हैं इन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कमांड रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं. एंड विद दिस मोड ऑफ इंटरेक्शन कंप्यूटर डज द वर्क. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट. यू नो विदाउट इनपुटिंग नो आउटपुट कम्स. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. This involves receiving the request for I/O interrupts. मीन्स कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट की कंट्रोलिंग डिवाइस होगा वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज जॉब कंट्रोल. जब व्हेन द यूज़र वांट्स टू रन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ही मस्ट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. जब भी कभी यूज़र को कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना होता है तो वह सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करता है और he does the using operating system job control language और JCL. और उसके लिए वो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करता है. इस तरह से कई तरह के कमांड्स यूज़र द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सक्लूसिव लीगल राइट ऑफ द कॉपीराइट होल्डर. तो ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली लाइसेंस होते हैं और कॉपीराइटेड होते हैं. द लाइसेंस इज गिवन टू द राइट टू यूज़ द सॉफ्टवेयर अंडर सर्टेन कंडीशंस. और ये लाइसेंस जो है सॉफ्टवेयर को कब दिया जाएगा? अंडर एक निश्चित कुछ कंडीशंस में, वाइल restricted from the other users such as modification, further distribution. अगर हमें सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक विंडोज़, सोलारिस,
And second one is open source operating system. Open source software is a computer software that is available in source code form. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, सोर्स कोड फॉर्म में मिलता है. द सोर्स कोड एंड सर्टेन अदर राइट्स आर नॉर्मली रिजर्व फॉर कॉपीराइट होल्डर्स. तो जो सोर्स कोड होंगे और कॉपीराइट्स होंगे वो कॉपीराइट होल्डर्स के लिए रिजर्व होते हैं, अदर राइट्स. तो इस तरह से दे आर प्रोवाइडेड अंडर द ओपन सोर्स लाइसेंस दैट परमिट्स यूजर्स टू स्टडी चेंज एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर. और इस तरह से वो सॉफ्टवेयर्स को इम्प्रूव करते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे वेरी ऑफन डेवलप्ड इस पब्लिक कोलैबोरेटिव मैनर like Ubuntu, BOS, Linux. These are the examples. Next is types of operating system on the processing. So there are two types of operating system on the processing. First is batch operating system and second one is real-time operating system. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है. ईच user prepares like chop and on and off line device like punch card and submit to the computer operator. Example है payroll, stock control, billing system. And जो real time operating system होगा, तो real time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that is control the environment. The time taken by the system to respond and input and display of required updated information is termed as the response time. So you can see the example holiday and airline booking system. Real time systems are usually dedicated embedded systems. An operating system does the following activities. Like in such system, operating system typically read from the data and react to the sensor data. Now we see types of operating system, number of users. So that is very important. Two types of operating systems are there, single user and multi-user. Single user operating system provides a platform for only one user at a time. मतलब at a time एक ही यूज़र कंप्यूटर पर वर्क कर सकता है. They are popularly associated with operating system which runs on standalone like MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. And second one is multi-user operating system. It provides regulated access for a number of users by maintaining a database of known users. Refer to a computer system when two or more simultaneous users can work. These are called multi-user operating system. For example, Unix, Linux, Windows NT. Next type of operating system on the basis of interface. So mainly there are two types of operating system based on interfaces. First is GUI and second is CUI. So one by one we will see. First operating system is CUI. What is CUI? CUI means command user interface, or we can say character user interface. They help to keyboard to type the command to interact with the computer. You can only type text to give commands to the computer for using command prompt. Means by using CUI, user can give only commands to the computer for different work. There are no images or graphics on the screen. And second one is what is GUI. GUI is the most modern computer use. That is full form is graphical user interface. For example, MS Windows. This interface made it possible for a mouse to be used within computer, and interaction really become very easy as the code interact with just a click. Means apart from typing the command, we can use mouse. So modern operating system, we can say these are based on GUI. And now last point is types of operating system on the basis of their uses. So they are mainly of two types: standalone operating system, server operating system, and third is embedded operating system. Now first one is a standalone operating system. Standalone systems are complete units
इन देयर यून। स्टैंड अलोन सिस्टम क्या होते हैं, अपने आप में कंप्लीट यूनिट होते हैं। दे हैव ओन प्रोसेसर, उनके अपने प्रोसेसर होते हैं, आईओ डिवाइस होते हैं, और वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करते। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। You know very well Windows is an operating system. In mid 1980s, on the year, different versions are there like Windows 7, Windows Vista, Windows 8, 2012, and Windows 10, released in 2015. Now, second one is Mac OS X. Mac OS is a line of operating system created by Apple. So, Mac operating system, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया था, एप्पल। इट कम्स प्रीलोडेड ऑफ ऑल मैकिन्टोश कंप्यूटर्स एंड रिसेंट कंप्यूटर्स। सो दिस इज कॉल्ड द फुल फॉर्म ऑफ मैक ओएस इज मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थर्ड वन इज लाइनक्स। लाइनक्स इज a family of open source operating system, which means they can modified or distributed by anyone around the world. So Linux is basically a multitasking operating system which is used around the world, you can see. Now next one is called server operating system. A server operating system is an operating system that is designed specifically to support a network. तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू सपोर्ट ए नेटवर्क। अ सर्व operating system typically resides a server. The client computer on the network rely on the server for resources. The standalone operating system functions as client and work in conjunction with the operating system. For example, of server operating systems are Windows Server 2012, Unix Network, and BOS. The full form of BOS is Bharat Operating System Solutions. And there are some examples like Windows Server 2012. It is upgraded of Windows Server 2008 and is server version of 2012, which includes feature like cloud computing, imported web server management, enhanced server security, etc. Now we come to the next operating system, that is Unix. Unix is also a server operating system. Unix भी ये क्या है, server operating system है। Unix is capable of handling a high volume of transaction in multi-user environment and working with multiple processors using multiprocessing. And third one is Solaris. Solaris is server version of Unix development by Sun Microsystems, operating system designed specifically for e-commerce application. Next one is BOS. The full form of BOS is Bharat Operating System Solutions. Is an easy to use version of Linux developed by CDEC India. BOS makes it easier for Microsoft Windows users for migrate GNU Linux platforms. Currently, BOS is available in all the official Indian languages. And last part is embedded operating system. You know, nowadays mobiles are comes in different varieties. So आपने आजकल देखा होगा कि मोबाइल्स जो आ रहे हैं उनको चिप लेवल पे तैयार किया जाता है, तो दे कंसीडर्ड एज एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी किसी चीज़ को हम चिप लेवल में कन्वर्ट करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट resides a ROM chip. Popular embedded operating system today include Windows Phone, Palm Phone operating system, iPhone OS, BlackBerry, Google Android. For example, Windows Phone. Windows is an operating system from micro of a specific type of smartphone, and PDA. PDA means Personal Digital Assistant. It provides many features for checking email, browsing the web, listening to the music, taking the picture, watching the audios, videos, and receive the text messages. So we can say Windows 8 phone is the current generation of Windows Phone operating system. Our next one is Palm operating system. So it is a mobile operating system initially developed by Palm, included for personal digital assistant and smartphone. Palm OS was designed from beginning to fit into a palm size device of a specific size and with a specific display size. And last one is iPhone operating system.
iPhone operating system developed by Apple for the iPhone, iPad Touch, Apple smartphone, and Apple TV. With finger motions, user can manage contacts and notes, send and resend email and text messages, text pictures, record videos. So now it is the end of this chapter 1. Dear students, I suggest you to read this chapter sincerely again and try to solve the exercise on your fair computer notebook. Already I have sent you the PDF of chapter 1 in WhatsApp group, and you can also get the solution on Sanskar Valley Academy app by getting your ID and password. So please collect your ID and password from the school, and on that app you can get the solutions and then you can do the exercise. If any problem in the exercise, you can ask me. Thank you, students.